Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In my today's session, we are going to start chapter number 7. The name of this chapter is, as you can see on the screen, housing and clothing. Okay. Under this chapter, we are going to see what is the meaning of houses, how many types of houses. Okay, and also we are going to see clothing. What is the meaning of clothes? Okay, and how many types of clothes is we wear? Okay, so all those things we are going to see in this chapter. Okay, so come with me and start the chapter. We all need a house to live in. हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं, तो हमारे रहने के लिए हमें घर चाहिए, सबको चाहिए, चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना, उन्हें भी घर चाहिए. जंगल आर देयर हाउसेस. नाउ सी, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. ठीक है, हमारा घर हमें किस किस चीज से बचाता है? Okay, our house keep us safe from heat, cold and rain. Okay, we feel safe and comfortable in our house. Okay, in our house we feel much more secure in comparison of any other places. Okay, it also protect us from wild animals and thieves. Our house protect us from the attack of wild animals and thieves. Okay, now here you can see there are three pictures are given, and in these three pictures there are three different kind of houses are shown. Okay, so the first type of house is कच्चा houses. ये कच्चे हाउस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? स्पेसिफिकली विलेज एरिया में. ठीक है. The second one is pakka houses. Okay, in our town and in our city area we can see pakka house. Okay, and the third one is multi-story building. ठीक है. अब ये multi-story building क्या है? ये देखिए यहाँ पे कई सारे फ्लोर्स हैं. ठीक है, तो जिन बिल्डिंग्स में बहुत सारे लेयर्स होते हैं उन्हें हम मल्टी स्टोरे या मल्टी लेयर्ड बिल्डिंग बोलते हैं. ठीक है, तो ये कहाँ पे हमें मिलेंगे? ये हमें गांव एरिया में मिलेंगे नहीं, ये हमें टाउन में भी नहीं मिलेंगे. मल्टी स्टोरे बिल्डिंग्स आर फाउंड इन सिटी एरियाज. ओके, so we are going to discuss all these three type of houses in detail. Okay, see, houses are three types. हाउसेस कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं. ठीक है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस: परमानेंट, टेम्पररी एंड मूवेबल. ठीक है, मींस देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस. द फर्स्ट टाइप इज योर परमानेंट हाउस एंड टेम्पररी हाउस एंड मूवेबल हाउस. अच्छा, परमानेंट और टेम्पररी तो ठीक है, मूवेबल क्या है? हाउसेस क्या मूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. चलो देखते हैं. परमानेंट हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन एंड सीमेंट. सो जो परमानेंट हाउसेस होते हैं, यहाँ पे आप देखिए परमानेंट हाउस कौन सा है इसमें? ये हमारा पक्का हाउस और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है. ठीक है, तो ये परमानेंट हाउसेस हैं. ये किससे बने होते हैं? ये हमारे बने होते हैं ब्रिक से, स्टोन से और सीमेंट से. ठीक है, तो इन तीनों को मिला के हम लोग परमानेंट हाउस बनाते हैं. ठीक है, परमानेंट हाउस का मतलब क्या है? आप इनको इजिली तोड़ नहीं सकते. ठीक है, they last very long. Okay, means the lasting duration is very long. Okay, it can be single story or multi story building. ठीक है, ये single story भी हो सकता है, multi story भी हो सकता है. Here is a picture of multi story, but what is the meaning of single story? This pakka house is also called as single story building. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या एक ही single store है. ठीक है, so pakka house is also sometimes called as your single story building, and here you can easily see multi story building. ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्गर देन वुड और मड हाउसेस. ओके, अच्छा आप इस पिक्चर में देखिए कौन सा हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कच्चा हाउस है या फिर पक्का हाउस स्ट्रॉन्ग होगा? ऑब्वियसली हमारे पक्के हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. ठीक है, क्योंकि कच्चे हाउसेस को तोड़ भी सकते हैं, बट यू कांट इजीली ब्रेक योर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और परमानेंट हाउसेस. ओके, they do not last very long. Okay, now see, here kacha house. Kacha house means your temporary houses. Okay, temporary houses are basically made from 3 things: your wood, bamboo and mud. By using wood, bamboo and mud we construct a house, and that house is known as your temporary houses or your kacha houses. Okay, they are not very strong, that's why they are not very long lasting. Okay, movable houses are made of wood or canvases. Okay, so here we discuss there are 3 types of houses: permanent, temporary and movable. Permanent houses are made from brick, stone and cement. On the other hand, temporary houses are made with the help of wood, bamboo and mud. अब ये मूवेबल किससे बने होते हैं? ठीक है, और ये कौन से हाउसेस होते हैं? लेट्स हैव अ लुक. मूवेबल हाउसेस आर मेड ऑफ वुड और कैनवास. ठीक है,
मूवेबल हाउसेस आपके वुड के बने होते हैं, ठीक है। सम पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर देयर वर्क, दे लिव इन दिस हाउसेस। अच्छा, मूवेबल हाउसेस में कौन रहता है? बहुत से लोगों को काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, ठीक है। तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ड्यू टू देयर वर्क, they usually used to live in these houses. Okay, so here you can see the picture of movable houses. So other movable houses, so apart from this houses, we are going to see the other examples of movable houses. The first one is karwa. The first type of movable house is karwa. Now what is the meaning of karwa? Karwa is a movable house. Okay, karwa is an example of movable house, means आप कारवा को कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। It can move easily from one place to another. It is called a house on wheels. Okay, so the another name of कारवा is house on wheels. ठीक है, ये देखिए, आप लोग कार्टून देखते हैं, कार्टून में कितने सारे आते हैं, जैसे सिम्पसन्स हैं और टॉम एंड जेरी, इन सब में नहीं दिखाते हैं आपको कि ये बहुत सारे ऐसे हाउसेस होते हैं जो चलते रहते हैं खुद से, ठीक है। तो ये कौन से एग्जांपल्स है? ये होते हैं आपके मूवेबल हाउसेस के एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस कितना फेमस कार्टून है, उसमें ये सब किस में रहते हैं? ऐसे ही घरों में रहते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये कारवां सब क्या है, शो करते हैं आपके मूवेबल हाउसेस को। ओके, दिस ऑल हाउसेस हैव अ व्हील्स। ओके, नाउ houseboat. After कारवा, the another example of movable house is houseboat. Houseboat का क्या मतलब है? नाव के ऊपर घर, ठीक है। A houseboat is a wooden house made on the boat. Again, houseboats are made with the help of wood. It is a floating house found in the lakes of Kashmir and Kerala. ठीक है, ये floating house है। और इसको हम floating house क्यों कहते हैं? Why we called houseboats as a floating house? क्योंकि ये नाव पे बना, नाव कहाँ चलती है? पानी में ही चलती है। इट मीन्स अ बोट इज फ्लोटिंग, दैट्स व्हाई द हाउस इज आल्सो फ्लोटिंग। ओके, ये कहाँ पे हमें मिलते हैं? इंडिया में। ये हमको कश्मीर में मिलते हैं और केरला में मिलते हैं, ठीक है। केरला इज फेमस फॉर हिज हाउस बोट। ओके, नाउ टेंट। टेंट भी एक मूवेबल हाउस का एग्जाम्पल है। टेंट क्या होता है? अ टेंट इज यूजुअली मेड ऑफ कैनवास और क्लोथ. It is used by campers, nomads and soldiers. टेंट किससे बना होता है? ये कपड़े से बना होता है, ठीक है। ये बेसिकली ट्रायंगुलर शेप में होता है, बेसिकली ट्रायंगुलर शेप में है। ये कहाँ से बना होता है? ये आपके बनते हैं एक स्पेशल क्लोथ होता है जिसका नाम कैनवास है, ये उसी से बनता है बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, और टेंट को यूज कौन करता है? ठीक है, टेंट यूज होते हैं बेसिकली आपके कैंपर्स, नोमाड्स और सोल्जर्स के थ्रू। कैंपर्स कौन होते हैं? ठीक है, हमें हिली एरियाज में जाना बहुत पसंद है, जंगल में जाना बहुत पसंद है, ठीक है। जंगल सफारी का नाम सुना है आपने? जो लोग जाते हैं जंगल में और स्टे करते हैं, ओके, सो उन्हें हम कैंपर्स कहते हैं, ठीक है। वो जाते हैं और स्टे करते हैं वहां पे। नोमाड्स का मतलब क्या है? जो डेजर्ट एरिया में लोग रहते हैं, ठीक है। बेसिकली वो क्या करते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो अब उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं वो कच्चा या पक्का हाउस बना के रहे परमानेंटली, तो वो क्या करते हैं? वो आपके टेंट हाउसेस में ही रहते हैं, ठीक है। और हमारे सोल्जर्स इन टेंट हाउसेस में रहते हैं, ठीक है। सो अनदर एग्जांपल ऑफ मूवेबल हाउस इज स्टिल्ट हाउस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिल्ट हाउस? Some houses are made on wooden poles. The base of such houses quite high from the ground level. Such houses are called your stilt houses. अच्छा, अभी stilt houses का क्या मतलब है? You can see here. This is an example of tent, okay? And this is the example of stilt houses. Stilt houses जानते हो क्या होता है? ये घर होता है जो कि wooden pipes के ऊपर बने होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये घर देख रहे हो, ये देखो wooden pipes पे ये बने हुए हैं, ठीक है। See? ये वुडन पाइप से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो घर होते हैं ना, उनको हम स्टिल्ट हाउसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली अर्थक्वेक वाले एरियाज में बनाए जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मूवेबल हाउस इज योर इग्लू। इग्लू क्या होता है? हियर इज एन एग्जांपल ऑफ इग्लू, यू कैन सी। वैसे देख के ही पता चल रहा है आई सही है, ठीक है। तो देखो, पीपल इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लिव इन इग्लू।
बहुत ठंडी जगहों पे जहां बहुत ठंडी पड़ती है. So the people who used to live in very colder region, they construct igloo houses. Okay, these houses are made of snow, and igloo houses are made from snow. Here you can see this is a igloo, this is the entrance of the house. Okay, so this whole house is constructed with the help of snow. Okay, now here you can see this is an example of houseboat. Okay, so this is all about our houses. Now we are going to see clothes we wear. Okay, here we are going to discuss clothes. But before I start this clothes paragraph, I would like to tell you about some facts. Okay, animals like polar bears that live in cold places have their body covered with fur. ठीक है, पोलर बियर कहाँ रहते हैं? पोलर एरियाज में रहता है जो बहुत ठंडी होती है. ठीक है, तो ऐसे में पोलर बियर सरवाइव कैसे करते हैं? इतना ठंड है वहां पे. हाउ पोलर बियर्स कैन सर्वाइव? पोलर बियर सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी पे एक व्हाइट कलर का फर होता है जो कि उनको कोल्ड से बचाता है. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्लोथ्स वी वियर में क्या है. We wear clothes to protect ourselves from heat, cold, rain, dust and insects. Okay, my dear students, we wear clothes to protect ourselves from heat. Okay, from heat, cold, rain, dust and insects. We want to protect ourselves from all these factors. Okay, we need clothes according to the weather and climate. Okay, and my dear students, always remember we keep our dressing sense according to the seasons. Okay, if there is a summer season, we are going to wear light cotton made clothes, and if there is winter season, we are going to wear clothes made from wool. Okay, we wear different types of clothes throughout the year. So in this way, throughout the year, we wear different types of clothes. We should always wear clean and well ironed clothes. Always remember, my dear students, whenever you are wearing any kind of clothes, always remember to wear neat and clean and well ironed clothes. Okay, see here you can see in summer season we used to wear light cotton clothes. Okay, we generally wear white or light colored clothes which reflect heat. And why we wear white or any light colored dresses? Because, my dear student, we don't want to attract the sun rays. Okay, we want to reflect them. So white color or any light color reflect back the sun rays. Okay, cotton absorbs sweat also. Okay, in summer seasons में क्या होता है? Sweating होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो कॉटन कपड़े पहनते हो ना तो पसीने सूख जाते हैं. देखो here you can see the examples of cotton clothes are given here. Means the examples of summer clothes are given here. T-shirt, top with skirt, kurta pajama or shorts. All this type of dresses we used to wear in summer season. Okay. Now what about winter season? Okay, see. In winter, we wear woolen clothes. Okay, in winter season, we usually wear woolen clothes only. It keeps our body warm. And why we wear woolen clothes? Because woolen clothes keep our body warm. We also put on shoes and socks to protect our feet. And giving protection to our feet, we wear socks and shoes. Here you can see the examples of winter clothes. Sweater, muffler, gloves, coat, socks, woolen caps and shoes. All these items are worn. All these items are worn by human being in winter season. In rainy season, because there is another season in our country, India, which prevails it is rainy season. Okay. In rainy season, we wear dresses with raincoat on a rainy day. Okay. In rainy season, we wear raincoat. Okay. Raincoat is made of plastic. Okay, raincoats are made from plastic which are waterproof. Okay, and in winter and in rainy season we also use umbrella for protecting ourselves. Here you can see the example of raincoat and umbrella. Okay, so my dear student, this is all about in this chapter. So come with me quickly and let's have a quick recap. See, the first thing which we learn through this chapter is a house protects us from heat, cold, rain and storms. Okay. People make different types of houses. Okay, people make different types of houses according to their need. People should keep our houses clean and dry. Okay,
Houseboats and karma are houses that can move from one place to another place. We wear different types of clothes throughout the year. Okay, so this is all about in this chapter. I hope, my dear students, you got a very good understanding of this chapter. Okay, revise this chapter and complete the exercise based on this chapters. Okay, now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new video. Till then, take very good care of yourself. Bye.